Assalamu alaikum. Today it's going to be lecture number 22, and in the last lecture we covered a little recap about the policy analysis. We talked about that why policies are important in natural resource management, what are the critical points, how policies are going to be evaluated, and what kind of steps are being taken in Pakistan. With reference to policy analysis, I told you that उसके अंदर आपकी एक agenda setting होती है, फिर आप alternatives को देखते हैं, then you weigh the alternatives, then you see which alternative is the best, फिर आप उसको implement करते हैं. Implementation के बाद ये भी एक public administrator की एक it's one of the duties, but the major part where I started was कि उस policy की implementation के बाद we are looking as the worth of the policy. Policy को evaluate हमने करना है, whether the policy has actually taken away the pain or have solved the issue due to which the policy has been implemented or not. So after that the evaluation, then we have the dissemination कि आपने policy को आगे disseminate करना है कि whether it can be replicated, कोई इसके अंदर corrections की ज़रूरत है, या what kind of issues are to be dealt with the implementation अगर कोई इसके अंदर कोई changes आते हैं. So that was basically the major overview of that lecture. लेकिन फिर हमने evaluation के अंदर एक और चीज़ पढ़ी कि there are not only just one method of evaluating the policy, there can be so many frameworks. उसके अंदर फिर हमने different जो common पढ़े, control group हो सकता है, उसके बाद आपका एक experimental group होता है, with और without हो सकता है, regression lines के साथ हम कर सकते हैं, उसके बाद आपकी after and before उनका दोनों states का comparison कर सकते हैं. Those are the policy analysis tools. और लास्ट में फिर हमने कुछ frameworks पढ़े कि आपके cost benefit analysis था, आपका discourse analysis था, उसके बाद आपकी ये जो मार्टिन हेजर का हमने framework पढ़ा, then we talked about linguistic, फिर schools का framework था. So there were different kinds of frameworks that we said. और जो हमारा जो experimental था, that was national climate change policy. Now by this time we have analyzed the policy, we have understood that how to evaluate a policy. Now we are going to talk about climate change. What is the science behind it, what exactly it is, and how it is affecting our natural resources. Over here, background. Climate change is really happening. Maybe you, I believe in it. But there are certain people who are still skeptic. People who still do not think that climate change nahi ho raha, that category is known as climate skeptics. And we are climate advocates who feel that climate change is happening. A simple test may be, if you see when you were in class 1, what was the weather at that point of time? How much summers used to be? How many air conditioners were there in a room? You see that things have changed. Things have gone intense. Load shedding पहले भी शायद अगर इतनी ना होती हो, लेकिन पहले भी होती थी, but people wouldn't feel that much hot. In Pakistan, we have experienced floods at a very wrong time. मौसम ठंडा होते होते भी अब टाइम लगता है. Weather patterns are changing. So climate is not the same. That's what climate science is telling us. ठीक है. Second, हमने एक और हम establish करते हैं कि जो climate के जो victims हैं, they are mostly the poor, not the rich. If you remember in the earlier lectures, I told you that when the climate change is happening, when the floods are coming, when the cyclones come, so a गरीब आदमी की छोटी सी hut है, and as compared to a rich person who has a big house, who has acres of land, and when the flood comes, it doesn't see whether it is coming for the poor, it doesn't see whether it is coming for the rich.
जब हम मॉनेटरी टर्म्स में देखें, जब हम इकोनॉमिक लॉसेस में देखें, सो ज़्यादा किसका डैमेज हुआ? इट इज़ द रिच, नॉट द पुअर, क्योंकि पुअर के पास बहुत छोटा सा लैंड होल्डिंग था, पुअर की हट बहुत छोटी थी। लेकिन अगर रिच को देखो तो उसका पूरा बड़ा घर भी तबाह हो गया, उसके इतना ज़्यादा लैंड था वो भी सारा तबाह हो गया। बट अगर आप ये सेकंड पॉइंट देखें, मोस्ट विक्टिम्स आर द पुअर, दे लॉस मोर बट रिकवर लेस। ये जो रिकवरी वाला है पॉइंट, दैट मेक्स देम मोर वल्नरेबल, ठीक है। अदरवाइज अगर आप इकोनॉमिक लॉस में देखें तो इट इज द पुअर, इट इज द रिच हु इज एक्चुअली सफरिंग, नॉट द पुअर। सो देयरफॉर what we are trying to say is कि जो बाउंस बैक कैपेसिटी होती है वो रिच की मच मोर हायर होती है और पुअर की ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है, क्योंकि पुअर रिकवर नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई वी से वी हैव टू मेक प्रो पुअर पॉलिसीज। किसके बारे में सोचना है हमने? पुअर के बारे में सोचना है, क्योंकि रिच के पास बैंक अकाउंट्स हैं, वो नहीं तबाह हुए, ठीक है। नाउ क्लाइमेट चेंज के कुछ सिग्निफिकेंट बैरियर्स हैं और कुछ चैलेंजेस हैं किसको मीट करने में? MDGs को। MDGs हमारे क्या है? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स यूनाइटेड नेशंस दिए है, उसके अंदर आपके 8-10 गोल्स हैं कि जी आपने पॉवर्टी को ख़त्म करना है, आपने हंगर को ख़त्म करना है, आपने हेल्थ इंडिकेटर्स को बेहतर बनाना है। सो जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो आपकी ये बाकी जो अचीवमेंट ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है वो भी क्या लग रही है? मुश्किल लग रही है विद दिस क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो मिलेनियम पूरे आपके डेवलपमेंट गोल्स की प्रोग्रेस क्या होगी? अफेक्ट होगी बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज। फिर क्लाइमेट चेंज एनहांसेस existing risks and vulnerabilities. Earlier I was living near the seaside, कोई as such कोई cyclones नहीं आते थे, कोई tsunamis नहीं आ रहे थे, लेकिन now I am more vulnerable. Climate change के होने से, climate change के intensity बढ़ने से अब क्या हो गया है? I have become more vulnerable. I have become more risk. Then flood, droughts, storm, साइक्लोन, सैलिनिटी, इंट्रूजन, ये हमारी क्या कर रही हैं? आपकी जो एनुअल एग्रीकल्चरल आउटपुट्स हैं ये भी एकदम आपकी क्या हो गई हैं? फॉल डाउन हो गई हैं। उसके बाद वल्नरेबिलिटी इज वेरी हाई इन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इन द ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। ये तो है कुछ बेसिक बुनियादी बातें। बट लेट्स टॉक अबाउट सम डेफिनेशंस। जब हम बात करते हैं कि जी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, व्हाट एग्जैक्टली इज क्लाइमेट चेंज? तो यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट्स आते हैं। वन इज वेदर एंड another one is climate and the third one is your climate change. Now what is weather? ठीक है, वेदर क्या होता है? इट इज द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ गिवन टाइम एंड प्लेस with respect to variables such as temperature, moist and pressure. State of the atmosphere at a given time. आज मौसम बहुत अच्छा है at a given point of time, ठीक है। Then what is climate? It is the average weather. अब उन्हीं weathers को क्या करते, जो आप उनका average ले लो तो हमें पता चल जाता है पाकिस्तान is more of a temperate, यहाँ पे ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी अफ्रीका की तरह नहीं पड़ती, ठीक है। सो इट इज़ द एवरेज वेदर, इट इज़ द स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ मीन वेदर कंडीशंस ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल ईयर्स, टिपिकली 2 to 3 decades, ठीक है। 30 years 40 years का जब हम एवरेज लेते हैं तब हमें पता चलता है कि जी इस पर्टिकुलर जियोग्राफिक बाउंड्री का क्लाइमेट क्या है। सो वेदर एंड क्लाइमेट आर टोटली डिफरेंट, ठीक है। वेदर इज मे बी डेली आपका वेदर चेंज हो रहा है और क्लाइमेट इज बेसिकली एन एग्रीगेट ऑफ 20-30 years. Then the third part comes, that is my climate change. Now what is climate change? Climate change in excess of natural variability attributes to human activity. अब कुछ तो natural cycles आपके चल रहे होते हैं, कुछ आपकी चल रही होती है ह्यूमन एक्टिविटीज। अब आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि ह्यूमंस आर टू बी ब्लेम्ड फॉर क्लाइमेट चेंज। मे बी मैंने इतनी ज्यादा ओजोन की डिप्लीशन नहीं करनी थी, मे बी मैंने इतनी ज्यादा वो कार्बन एमिशंस ना करता, अगर मैं फैक्ट्रीज धड़ाधड़ ना लगाता तो क्लाइमेट में भी इस तरीके से गर्म ना होता। तो ह्यूमन एक्टिविटीज ने क्या किया है,
ये जो प्रोसेसेस हैं, जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं, वो तो और इट्स नॉट कि क्लाइमेट में वार्म नहीं होना था, इट वाज सपोज टू बी, आइस एजेस आती हैं, इस तरह हॉट टाइम पीरियड्स आते हैं, बट ह्यूमंस हैव इंटेंसिफाइड इट, ठीक है, दे हैव एक्चुअली इंक्रीज्ड द टेम्परेचर सो मच कि जी नाउ इट इज बिकमिंग प्रॉब्लमेटिक. Climate change in excess, apart from these natural variability, attributable to human activity. Human activity की वजह से हमारा climate change ज़्यादा है. एक और बड़ी important point that जिस तरह global warming पहले होती थी, हमने कहा जी global warming हो रही है, global warming हो रही है. Then we said there is going to be climate change. अब जो नया हम एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, दैट इज नोन एज दैट इज नोन टू बी माय क्लाइमेट क्राइसिस. अगर आप नया मॉडर्न लिटरेचर पढ़ोगे या नई वीडियोस देखते हैं या एक्सपर्ट्स को बात करते हुए देखते हैं, सो दे से कि लेट्स टॉक अबाउट क्लाइमेट क्राइसिस, कि अब ये चेंज नहीं है, अब ये क्राइसिस है. ये वाली टर्म एल गोर ने कॉइन की, और एल गोर ही वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए. उसने एक अपना द क्लाइमेट प्रोजेक्ट एक स्टार्ट किया हुआ है. पाकिस्तान क्लाइमेट प्रोजेक्ट क्या करता है कि यहाँ से फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड दे सिलेक्ट पीपल, दे ट्रेन देम, और ये उनका प्रोग्राम है ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर्स. और फिर वो ये ट्रेनर्स को जब एल गोर खुद ट्रेन करता है एंड देन ही जस्ट सेंड्स देम बैक टू देयर कंट्रीज, और फिर आगे से वो डिससेमिनेट करते हैं climate change की information. It's a very interesting project. If you are interested in becoming the trainer for climate change, do go on this website, that is the Climate Project. उसके अंदर एल गोर खुद वो ट्रेन करता है और आपको सारा टीचिंग मटीरियल एंड ऑल द प्रेजेंटेशंस ही विल गिव इट टू यू, एंड देन यू विल स्टार्ट डिससेमिनेटिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज टू अदर पीपल इन डिफरेंट कम्युनिटीज. सो उसने ये कहा, क्या कहा कि जी अगर एक मैसेज आप लोगों को डेली सुनाते जाएं, ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग, तो मे बी कुछ अर्से तक वो इफेक्टिव रहे, लेकिन बाद में लोग उसको रजिस्टर नहीं करेंगे. इसीलिए फिर ग्लोबल वार्मिंग से नाम क्या चेंज हो गया कि जी क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग. क्लाइमेट चेंज के बाद अब उसने कहा जी वी नीड another different word, and he called it as the climate crisis. So therefore it's just like कि आप एक साबुन का एक ब्रांड यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल लक्स. So Lux, that was 20 years ago, it is not the same Lux. उसकी रैपिंग चेंज होती है सारा कुछ, but the product is there. You still call it as Lux, लेकिन उसके अंदर एडवर्टाइजमेंट चेंज होगी, उसका मैसेज चेंज हो गया, उन्होंने अपना स्टार बदल लिया. सिमिलरली वो कहते हैं क्लाइमेट चेंज इज बिकमिंग ओल्ड, पीपल आर नॉट रिसेप्टिव टू दिस क्लाइमेट चेंज, सो लेट्स चेंज इट, लेट्स हैव क्लाइमेट क्राइसिस. सो आजकल अगर आप देखोगे, so you will see that now people are using this terminology of climate crisis instead of climate change. In this academic या social media पे ये वाली ज़्यादा बात चल रही है. Now climate change की definitions different institutions क्या देते हैं. IPCC, it is one of the institution of experts with reference to climate change. What they say about climate change, IPCC क्या बनता है, International Panel on Climate Change. Now what they say is change in climate over time, whether due to natural variability or as a result of human activity. इन्होंने बड़ी डिप्लोमेटिक डेफिनेशन दी हुई कि जी आपका क्लाइमेट में चेंज अगर आ रहा है आइदर नेचुरल एक्टिविटी से हो जाए या आपकी ह्यूमन एक्टिविटी से जो चेंज आ रहा है आपके क्लाइमेट में, दैट इज बेसिकली योर क्लाइमेट चेंज. उसके मुकाबले में UNFCCC क्या कहता है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, दे से चेंज ऑफ क्लाइमेट that is attributed directly or indirectly, इन्होंने ज़्यादा humans को blame किया, to human activity that alters the composition of the global atmosphere, and that is in addition to natural variability. So एक natural variability होनी है, ठीक है, उसके साथ ह्यूमन एक्टिविटी ने उसको क्या कर दिया, इंटेंसिफाई कर दिया, उसको और चेंज कर दिया, उसको फास्ट कर दिया. सो दैट इज बेसिकली योर क्लाइमेट चेंज. सो व्हेनेवर समवन आस्क यू अबाउट द डेफिनेशन, ट्राई टू कि जी आप कौन सी डेफिनेशन ले रहे हैं, मीनिंग दोनों के सेम है, बट यू नीड टू नो कि जी ये UNFCCC की डेफिनेशन, ये मैं IPCC की डेफिनेशन यूज कर रहा हूँ. बैकग्राउंड ये हुआ
कि जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, इसने क्या किया 1990 के अंदर अपनी फर्स्ट असेसमेंट रिपोर्ट दिया. फर्स्ट असेसमेंट रिपोर्ट क्या होती है, दैट साइंटिस्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हु आर इन क्लाइमेट चेंज, दे गेट टुगेदर, दे स्टार्ट राइटिंग डिफरेंट चैप्टर्स और फिर वो उनको कंबाइन करते हैं, उसका सिंथेसिस करते हैं और फिर वो पब्लिश करते हैं. अब उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहाँ पे जो फर्स्ट रिपोर्ट आई 1990 के अंदर, उन्होंने क्लाइमेट इम्पैक्ट्स देखे कि जी क्लाइमेट चेंज से क्या क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं, और इसके अंदर उन्होंने क्या देखा, कॉस्ट इफेक्टिवनेस के सॉल्यूशंस उन्होंने देखना शुरू किए. सेकेंड आईपीसीसी रिपोर्ट अगर आप देखो एवरी 5 ईयर्स के बाद आती है. सेकेंड आईपीसीसी रिपोर्ट आई आपकी 1995 के अंदर. 1995 के अंदर आपने एक तो क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को देखा, दूसरा कॉस्ट इफेक्टिवनेस को देखा. जो नई एडिशन आपने की उसमें आपने कहा कि जी इक्विटी का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है. सो द न्यू थिंग दैट वाज एडेड, दैट वाज इक्विटी. उसके बाद फिर आपने आफ्टर अगेन 5 ईयर्स आपकी क्या आ जाती है, थर्ड आईपीसीसी रिपोर्ट आती है. थर्ड आईपीसीसी रिपोर्ट 2001 के अंदर आती है और वो क्या कहता है कि जी क्लाइमेट इम्पैक्ट्स भी हो रहे हैं, उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिवनेस को भी लेके आए, इक्विटी को भी लेके आए, लेकिन जब जो नई चीज़ लेके आए, दे कॉल इट एज द अल्टरनेटिव डेवलपमेंट पाथवे. फिर फोर्थ आती है, अब फोर्थ के अंदर क्या आई आपकी क्लाइमेट इम्पैक्ट 2007 के अंदर फोर्थ आपकी असेसमेंट रिपोर्ट आई, एंड दैट वाज बेसिकली योर क्लाइमेट इम्पैक्ट्स, योर this cost effectiveness, your equity, your alternative development pathway. और अब यहाँ पे उन्होंने एक और टर्मिनोलॉजी ले आया, उन्होंने कहा जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की उन्होंने एडिशन की. और अभी 2014 के अंदर अब आ गई है हमारी फिफ्थ आईपीसीसी रिपोर्ट. एक और इसका बड़ा वो चेंज आया लोगों के बिहेवियर में. जब ये फर्स्ट आईपीसीसी रिपोर्ट आई थी, इट स्टर्ड अप, लोगों ने इसको पढ़ा, लोगों ने इस पर रिएक्शन किया, सेकेंड पे भी किया, थर्ड पे भी किया, फोर्थ पे भी किया. अब जब 2014 के अंदर ये फिफ्थ आईपीसीसी रिपोर्ट आई है, टेल मी सीरियसली हाउ मेनी ऑफ यू रियली न्यू अबाउट इट. कितनों को पता था कि जी आईपीसीसी रिपोर्ट की फिफ्थ रिपोर्ट आ गई और ये चीज़ें उसकी मेन हाईलाइट्स हैं. वेरी फ्यू. और अगर आप इसका इंटरनेशनल कवरेज देखें, वी हैवंट गॉट मच ऑफ द इंटरनेशनल रिस्पॉन्स ऑन इट. 2006 के अंदर निकोलस स्टर्न ने एक रिपोर्ट की थी, एंड दैट वाज इकोनॉमिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज. दैट एक्चुअली क्रिएटेड रिपल्स 2006 के अंदर. और उस रिपोर्ट में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जी आप यू हैव टू स्पेंड दिस मच अमाउंट ऑफ योर जीडीपी in order to save the planet. और वो काफ़ी ज़्यादा पोर्शन था जीडीपी का. सो lot of people started writing upon it. उसके बाद in the same year 2006 के अंदर आपके एल गोर ने, अभी जिनका आई वाज टेलिंग यू कि उसने इनकन्वीनियंट ट्रूथ के नाम से एक बुक उसने पहले लिखी थी, उस इनकन्वीनियंट ट्रूथ के ऊपर उसने मूवी बनाई. इफ़ यू हैवंट सीन दैट मूवी, then believe me, I would say shut down this lecture, buy the DVD and see Inconvenient Truth. और जितना भी मैं climate change के बारे में बता रहा हूँ, the movie is made remarkable. बड़ी low budget movie. I felt it was a very low budget movie because he is in a room and he is making a presentation to a group of people, and through this presentation he is communicating कि जी climate change आपकी दुनिया में हो रहा है, and these are the dangers of climate change and this is how we can respond to it. Amazing movie, and I think हम इस तरह की कुछ 4-5 movies बना सकते हैं, जिस तरह now I am making with you, but the issue is that that movie got an Oscar award. So you see कि जब निकोलस स्टर्न की रिपोर्ट आती है इकोनॉमिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, जब this guy's एल गोर ने जब इनकन्वीनियंट ट्रूथ का ऑस्कर मिला, उसके बाद आईपीसीसी की फोर्थ रिपोर्ट 2007 के अंदर आई, दे एक्चुअली रैंग द बेल्स. ठीक है, जैसे चर्च बेल्स होती हैं, एकदम घंटे बजने लग पड़े. पीपल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, पीपल स्टार्टेड राइटिंग अबाउट इट. वहीं पे एक क्लाइमेट एडवोकेट्स आ रहे हैं, एक क्लाइमेट स्केप्टिक्स आ रहे हैं. सो पीपल कॉन्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स इट. अब जब 2014 के अंदर ये रिपोर्ट आई, आईपीसीसी फिफ्थ रिपोर्ट, वी हैवंट heard those alarm bells. People are not worried about it. People are not shocked about it. And due to this reason, what happens that we need to change the behavior of people. We need to see that why people are not responding to this kind of these alarm bells. Now, let's see how IPCC fifth report is going to respond back. But in other words, people are either they have become used to it कि जी ठीक है क्लाइमेट शैम है, दुनिया वैसे की वैसी रहेगी, और दे आर नॉट टेकिंग इट एज अ थ्रेट. एक हार्वर्ड के अंदर एक प्रोफेसर है डैन गिलबर्ट,
Dan Gilbert ने एक presentation की हुई है and he talks about कि why people are not responding to it. If I get time, I'll share that presentation with you, and it's an amazing presentation. And then you feel कि why do we need to change name? अभी हम Dick रखा हुआ, फिर हम कहते हैं Tom रख दो, फिर हम कहते हैं Harry रख दो, so that people respond to it. But he comes out with a very different perspective. He's basically his PhD is in psychology, और उसने कहा है कि जी it's more of a behavioral concept, that why people are not responding to climate change because of the behavior, and he gives 4 reasons that why people are not respond to climate change. According to him, the economic damage or the threat that we have from 9/11 or terrorism का जो threat है, it is much less as compared to the threat for climate change, and he calls it that climate change is the weapon of mass destruction. But do we register it? Do you really think that climate change is a threat? Do you really think that climate change के लिए मुझे यहाँ आपको कुछ करना चाहिए? Seriously, I feel that maybe 1 or 2 might be saying, nodding like this, otherwise सारों ने कहना जी कुछ नहीं हो रहा, the weather is always like that, so we are not supposed to do anything. This is the brutal truth, and it's not only in Pakistan, even in USA, UK, Europe में चले जाओ, even in Africa, people don't respond to it because this changes, as I said, 40 years, पता नहीं 40 years में either I am living or not, but this thing is still happening. So therefore we don't register it. So therefore it's more of a behavioral aspect more than of a why people are not responding to it. So ladies and gentlemen, 5th report आ चुकी है, do browse it, do see कि जो उसके अंदर क्या changes हैं, और उसमें तो इन्होंने एक alarming situation ये दी है कि आपकी पूरी की पूरी ice sheets गायब हो गई हैं. Siachen glacier का I think I have that picture in my Siachen glacier has actually started compressing. अब उस glacier के लिए क्यों fight करना, क्योंकि वो glacier अब वैसे ही खत्म होता जा रहा है. So चलें, our army expenses are going to get reduced because of this climate change. Anyway, so let's not stop till the 4th assessment report. We have the 5th assessment report, and today it's 2014. Now, over here, this is global atmospheric carbon dioxide emissions, और ये अगर आप diagram में देखें तो हमारी क्या होती जा रही है, carbon emissions increase होती जा रही हैं, and by 2000 it has reached to 370 parts per million. अब होता क्या है कि हमारी ओजोन लेयर क्या होती जा रही है, it is becoming weak. Why ozone layer is becoming weak? Let's see what exactly is ozone. I'm sure people who have already background in environmental sciences or geography don't know it very well, but you see, we have diversity of students who might not be knowing about it, so therefore I have to read it. Anyway, a layer in Earth's atmosphere which contains relatively high concentrations of ozone. इसको हम O3 कहते हैं. Ozone absorbing the ultraviolet rays and heats up and again sends back. तो ozone layer क्या करती है, ये जो आपकी blue वाली नजर आ रही है यहाँ पे, where it is, yes, this, ये आपकी क्या है, this is your ozone layer, और ये क्या कर लेता है, ये absorb कर लेती है, और बाकी without ozone layer all solar ultraviolet would get out to ground causing cancer and germicide, killing of many things in top to bottom food chain. तो ये अब इनको क्या करते हैं, ozone layer is very important for us, so it actually protects us. Next, ओजोन होल आपका क्रिएट होता जा रहा है. ये 1979 में हुआ था, और 1979 में अगर आप देखो ओजोन अबंडेंस ये है 500 तक, ये रेड में 500, रेड में तो नहीं गया, बट इफ यू कैन सी दिस इज मोस्टली ग्रीन, ठीक है ना. सो यहाँ पे ये 300 to 400 में आ रहा है ये सारा. अब व्हाई डू वी से ओजोन होल, 2003 में देखें ना, दिस ओजोन होल इज क्रिएटिंग, यानी आपका जितनी भी सन रेज हैं वो डायरेक्टली आके पेनिट्रेट कर जाती हैं आपकी अर्थ के अंदर, ठीक है. थिंग्स आर बैड. फिर एक होता है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट. ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, दिस इज आवर सन, ठीक है. सन ने क्या किया, सन ने अपनी रेज भेजी सीधी ऑन टू द अर्थ. अब यहाँ पे क्या हुआ, नंबर 2, यस, नेट इनकमिंग आपकी सोलर रेडिएशन 240 वॉट्स पर एम स्क्वायर. उसके बाद आपकी कुछ रेडिएशन अंदर चलेगी, कुछ आपकी बाहर चलेगी, और जो आपकी रिफ्लेक्ट होकर बाहर जा रही हैं, जो हमें सन यहाँ से, कुछ आपकी अंदर चली जाती है. अब क्योंकि हमारी ओजोन
क्या होती जा रही है, इट इज़ बिकमिंग वीक। तो हमारी जो सारी जो हीट है वो डायरेक्टली अंदर आ जाती है और हमारे प्लानट अर्थ को क्या करती जा रही है, बॉयल डाउन करती जा रही है, इट इज़ हीटिंग अप। अब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट and global warming are not the same things. Greenhouse effect क्या करता है, global warming क्या है, it is the rise in temperature of the surface of earth. अर्थ का टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, आपका जो अर्थ है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. बट an increase in concentration of greenhouse gases leads to increase in the magnitude of greenhouse effect, and that is known as the enhanced greenhouse effect. तो जैसे जैसे आपकी ये जो ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज करती जा रही हैं, अब वो गैसेस वापस बाहर नहीं जाती, दैट इज बेसिकली नोन एज माई ग्रीन हाउस इफेक्ट, विच इज रिजल्टिंग द ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट क्राइसिस, यू कैन से एज मेनी नेम्स एज यू वांट. अब जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस हैं, इनके अंदर आपकी क्या आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, then you have methane, then you have chlorofluorocarbons, then you have ozone, then you have nitric oxide, और आपके वाटर वेपर्स भी इसी के अंदर हैं. ठीक है. सो जो बड़ी बड़ी गैसेस हैं वो क्या है, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड. लेकिन ज़्यादा हम इसकी बात करते हैं कि जी कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इट्स अप्रॉक्सीमेटली 56%, दैट्स व्हाई इट इज़ मोर to be attributed with reference to your climate change. अब attributes ये हैं आपके, अगर आप इनको देखो, CO2 का और CF4 का, ये आपका एक टेबल है जहाँ पे इन सारी गैसेस का प्री इंडस्ट्रियल कंसंट्रेशन, 1998 कंसंट्रेशन, एनुअल रेट ऑफ चेंज, ये जिस तरीके से देखें इट इज़ 8.4 इसका चेंज आया है आपके मीथेन का, एंड देन ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 100 ईयर्स में. ठीक है. एंड एटमॉस्फेरिक लाइफ साइकिल्स, ये आपकी गैसेस का आप देखें कि किस तरीके से इट इज़ इंक्रीजिंग एंड इट इज़ डे बाय डे इंक्रीजिंग, इट इज़ वार्मिंग द प्लैनेट. अब इन द लास्ट 100 ईयर्स, चलो पहले 1980s क्या करते हैं. इन द सिंस 1980s कार्बन डाइऑक्साइड 49% थी, लेकिन इन द लास्ट 100 ईयर्स में देखें 66% हो गई. अब यू कैन सी कि किस तरीके से अलार्मिंग नंबर्स के साथ गिर गया है. N2O 6 हो गई, 3 से 6 हो गई, अदर्स 13% हो गई, CFCs 14% हो गई हैं, और मीथेन आपकी पहले 15 थी, अब आपकी क्या होती जा रही है, 18 होती जा रही है. सो these numbers have actually increased, so that is alarming. climate change हो रहा है. ठीक है. Now share of global greenhouse gases in future, अगर आप बाकियों को देखें तो US से developed world 1995 में था 73%, लेकिन developed world is now making efforts, they are going to be 50%, but in other case आपकी जो developing world थी that was just उनकी total emissions थी approximately 27%, लेकिन the way they are growing, आपकी इंडियन इकोनॉमी, चाइनीज़ इकोनॉमी, ये सारी इकोनॉमीज़, लैटिन इकोनॉमीज़, अफ्रीकन इकोनॉमीज़, ये सारी, तो दे माइट गो टू 50%. तो ये लोग अपने डेवलप वर्ल्ड अपना कम करते हैं एंड दे आर गोइंग टू इंक्रीज इट. ठीक है. सो देयरफॉर इट इज़ गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट सिचुएशन विद रेफरेंस टू योर क्लाइमेट चेंज बाय 2035. कार्बन डाइऑक्साइड की अगर आप फ्यूचर एमिशंस देखें तो ये आपके एमिशंस का जो रिजल्ट दिखाते हैं, ये आपका इंक्रीजिंग ही आ रहा है. ठीक है. सो दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड पिक्चर. अब आपकी जो ओजोन डिप्लीशन हो रही है और आपकी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. ओजोन डिप्लीशन किस वजह से होती है, हैलोजन कंपाउंड्स आर रिलीज्ड इनटू एयर, डिफ्यूज्ड इनटू स्ट्रेटोस्फेयर एंड कैटालिटिकली डिस्ट्रॉय ओजोन लेयर. On the other side, global warming में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज इनटू एयर, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है और आपके एनवायरनमेंट को चेंज कर देता है. आपके जो ओजोन डिप्लीशन किस वजह से हो रहा है, आपके जो रेफ्रिजरेटर्स के अंदर आप तो वो बैन वैसे हो गए हुए हैं, और आपके जो हेयर स्प्रे आप यूज़ करते हैं उससे आपकी ओजोन डिप्लीशन होती है. और जबकि ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से हो रही है, दैट इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ फॉसल फ्यूल बर्निंग एंड डिफॉरेस्टेशन. इससे दरख्त लगाइए और फॉसल फ्यूल्स को बर्न मत करें. उसके बाद लेटेंसी टाइम क्या है यहाँ पे, इसको ओजोन के लिए हाफ अ सेंचुरी, अप्रॉक्सीमेटली 50 years, और जबकि ग्लोबल वार्मिंग के लिए इट्स मोर ऑफ अ डेकेड्स. इफ अलाउड टू गो एक्सट्रीम, तो वर्ल्ड इज गोइंग टू हीट अप, एंड ईज ऑफ सोल्यूशन क्या है बेहतर सोल्यूशन, आप इसको बैन कर दें इन टर्म्स ऑफ CFCs.
But global warming में solution is little bit difficult because people burn fossil fuels to have more economic growth. They want to have more economic development. अब global warming का एक doctrine है. Doctrine क्या है? Let's see. Number one, modern society burns fossil fuels such as gasoline, natural gas and coal. We all agree. Yes, we burn it. All of these give off carbon dioxide as they burn. So जैसे ही हम इनको burn करते हैं, जब हम gasoline burn करते हैं, natural gas burn करते हैं, coal burn करते हैं, which we all Pakistanis are doing at the moment, so ये क्या कर रही है? Atmosphere के अंदर carbon dioxide फेंकती है. The added carbon dioxide in the atmosphere अब क्या करेगी? Is increasing the greenhouse effect on the earth. Greenhouse effect होता है. अब इससे क्या होगा? This is increasing the temperature of earth beyond the normal range. क्योंकि हमने extra डालना शुरू कर दिया और जिससे अब क्या हो रहा है? Temperature of the earth आपका बढ़ने लग पड़ा है. And this will result in disastrous consequence for life on earth. We don't understand because we want economic growth. We want more and more GDP. Now, the only way to avoid this is to reduce carbon dioxide emissions, which seems difficult. अब आप दो देख रहे हैं. Number one is natural climate variability, कि जी आपकी naturally climate के अंदर जो changes आ रहे हैं, ठीक है. और दूसरा क्या है? Climate change के जो एक तो natural, दूसरा anthropogenic. अब क्या होता जा रहा है कि climate change में हमारा क्या हो रहा है? Global warming, ठीक है, increase precipitation and its uneven distribution. Equity वाला जो हम बता रहे थे कि जी it's uneven. US emission ज़्यादा करता है लेकिन effect में भी पाकिस्तान ज़्यादा हो रहा है. उसके बाद melting of glaciers and snow. Glaciers बहुत ज़्यादा recede कर रहे हैं. सी लेवल आपका बहुत ज़्यादा राइज हो गया, यानी वाटर अब आपका सी लेवल इंक्रीज करता जा रहा है. एंड दे से कि जी मैनहट्टन जो कि न्यूयॉर्क की एक बड़ी फेमस सिटी है, दैट इज़ नॉट गोइंग टू एग्जिस्ट एनी मोर अगर सी लेवल राइज हो गया. मालदीव्स तो है ही बेचारा, अब इट्स लाइक वो क्या कहते हैं, इट्स लाइक अ गेस्ट country because after climate change is going to, तो ये जो आपके small islands हैं, ये जो water पे जो हैं, they are not going to be seen anywhere. उसके बाद increase in frequency and intensity of extreme weather events. Floods आपके ज़्यादा हो गए, tsunamis अब आपके ज़्यादा आने लग पड़े हैं. उसके बाद cyclones आपके ज़्यादा, उसकी frequency ज़्यादा बढ़ती जा रही है. ठीक है, ये देखें, ये these are very natural. ठीक है, बट ओवर हेयर अगर आप देखो तो इट्स वेरी लाउड. एकदम इसने क्या कर दिया? इंटेंसिफाई कर दिया. अब इसके इम्पैक्ट्स क्या हो गए? आपकी वाटर की अवेलेबिलिटी ख़त्म होती जा रही है, वाटर फुटप्रिंट्स आपके कम होते जा रहे हैं. उसके बाद आपकी क्रॉप की यील्ड्स आपकी कम हो गई हैं. ठीक है, उसके बाद नाउ यू आर लुकिंग फॉर न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी, क्योंकि ओल्ड के ऊपर अब हमारा उस तरीके से डिपेंडेंस ख़त्म होती जा रही है. देन देयर इज़ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड देयर आर इंक्रीज्ड हेल्थ रिस्क. ये भी हम अगली स्लाइड्स में डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, क्यों अब ये आ रही है? ये वाली जो चीज़ है, ये जो एकदम वेरिएशन ज़्यादा सारी हो रही है आपके क्लाइमेट के अंदर. वाई? नंबर वन, पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज़ हो गई है. ठीक है, बिकॉज इफ़ यू रिमेंबर जो मैंने मेजर ट्रेंड्स बताए थे नेचुरल सोर्स मैनेजमेंट, उसके अंदर हमारी पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द इमर्जिंग थ्रेट्स एंड पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट अ वेरी हाई पेस. फिर हमारी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसकी पेस बहुत तेज़ हो गई है. अब हमारी इंडस्ट्रीज हम धड़ लगा रहे हैं एंड वी ट्राई टू instead of going for farming, instead of going for agriculture, we go for industry. Then increase use of fossil fuel in industry and transport. आपकी फ्लाइट्स में देख लें, एयरप्लेन्स एंड एवरीथिंग, आपके ज़्यादा से ज़्यादा हम फॉसल फ्यूल बर्न करने लग पड़े क्योंकि डिमांड फॉर फॉसल फ्यूल्स इज़ इंक्रीजिंग. और उसके बाद आपकी डिफॉरेस्टेशन फॉर एग्रीकल्चर एंड अर्बनाइजेशन. आपने कल हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने जब वो पढ़ा था लैंड यूज़ प्लानिंग, तो हमारी आपकी जो अर्बनाइजेशन है वो इंक्रीज़ होती जा रही है और एग्रीकल्चर भी क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है. एंड डिफॉरेस्टेशन हम करते जा रहे हैं. फॉरेस्ट्स लगाएंगे तो इट बिकम्स कार्बन सिक्वेस्ट, कार्बन के लिए वो हब बनती है, अदरवाइज आपकी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे जाएगी. ठीक है, सो दैट इज़ वन ऑफ द इश्यूज़. अब पोटेंशियल इम्पैक्ट्स हमने पढ़ लिया है, लेकिन अब विद रेफरेंस टू पाकिस्तान देखें कि ये आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, आपकी प्रेसिपिटेशन हो रही है और आपका सी लेवल राइज हो रहा है. अब इसने क्या किया है? आपके वाटर
रिसोर्सेज पे आप पे प्रेशर डाला, आपका एग्रीकल्चर कम हो गया, हेल्थ पे आपके इम्पैक्ट पड़ा, फॉरेस्ट आपके कम हो गए, कोस्टल एरियाज़ में ज़्यादा वो फ्रीक्वेंसी आ गई है, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लड्स वगैरह ज़्यादा आ गया, दे बिकम मोर वल्नरेबल एंड मोर रिस्की, और आपकी जो नेचुरल एरियाज़ में जो बायोडाइवर्सिटी थी, स्पीशीज़ थी, वो भी क्या होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं। कुछ ग्लोबल इम्पैक्ट्स अगर हम देखें क्लाइमेट चेंज के, तो नंबर 1 हमने भी देखा कि वाटर सप्लाई आपकी कम हो गई है, लेकिन जहाँ पे वाटर सप्लाई आपकी कम हो रही है वहीं पे वाटर डिमांड आपकी क्या होती जा रही है, इंक्रीज़ करती जा रही है। दैट इज़ के पॉपुलेशन प्रेशर ने आपकी क्या कर दी, डिमांड फॉर वाटर बढ़ गई है। इफ़ यू लुक एट जस्ट द कंपनीज दैट हैव फॉर्म्ड इन पाकिस्तान इन द पास्ट सिंस 2000 और 5 और 2006 कर लें, ये जो मिनरल वाटर की कंपनीज हैं, जस्ट इमेजिन मशरूम कर लिया, एक आम सूफी ब्रांड से लेकर नेस्ले तक, पेप्सी, एवरीवन हैज स्टार्टेड गोइंग फॉर वाटर, क्योंकि क्लीन वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो गई है। दैट इज़ जस्ट वन थिंग। लेकिन एग्रीकल्चर के लिए पानी नहीं है। इफ़ देयर इज़ नो वाटर फ्रॉम वे आर गोइंग टू हैव द प्रोडक्शंस। आपके जो इंडस है, उसके बाद जो आपका वो जो है रावी, जेलम, ऑल दीज रिवर्स आर नाउ गेटिंग अप, ड्राइड अप। 20% of the world's urban population, including 392 residents in Asia, lack adequate sanitation. इनके पास sanitation ही नहीं है। Approximately आपकी 25% आपकी developing जो country है, ठीक है? So that is a major threat. We are not just talking about numbers, but if you look at the conditions over there in East Asia, even in South Asia, go into the slums of Pakistan, you will see things are really worse. Then storage, treatment and capacity would need to expand, thus increasing the system cost. अब अगर आप इसकी capacities को अगर increase करते हैं, sanitation को बेहतर करते हैं, water supply को बेहतर करते हैं, आपकी costs क्या हो जाएंगी, increase कर सकते हैं. But is it the government duty? No, it's not, because government is least bothered about it. Climate change comes as the last priority. अब आपका पोटेंशियल इम्पैक्ट आपके हाउसिंग के ऊपर आ जाता है। आपकी हाउसिंग प्राइसेस क्या होती जा रही हैं, इंक्रीज करती जा रही हैं, ठीक है? कहाँ पे, जहाँ पे फ्लड प्रोन्स एरिया है। वैसे भी आपके हाउसिंग प्राइसेस इन द सिटीज हैव बिकम इंक्रीज्ड, दे हैव गॉन 8 टाइम्स। अगर आप बड़ी बड़ी ये जो हाउसिंग स्कीम्स देखें, अभी जो पिछला बबल आया था, वो आर हाउसिंग प्राइसेस इंक्रीज्ड 8 times. Why? उसके अंदर it's not just climate change, क्योंकि remember everything should not be attributed towards climate change. आपका जैसा बलोचिस्तान या KPK के अंदर जिस तरीके से टेररिज्म वगैरह आया, तो people have started moving towards the safe cities. और safe cities में आपका लाहौर आ जाता है, आपका कराची से काफ़ी माइग्रेशन हुई है, इस्लामाबाद आई है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 8 times आपकी रियल स्टेट की प्राइसेस बढ़ गई हैं। So therefore, in the flood prone areas जहाँ पे पहले as such floods नहीं आते थे, the population was not at risk, तो वहाँ पे अब land prices, housing prices बढ़ गई हैं। क्यों? वहाँ पे insurance prices बढ़ती जा रही हैं, because उनकी vulnerability ज़्यादा है। So if you are living near sea, तो वहाँ पे आपको insurance premium ज़्यादा देना पड़ता है। उसके बाद loss of property and land from sea level rise and subsidence. So आपका जो जैसे जैसे sea level बढ़ेगा, तो आपकी वहाँ पे प्रॉपर्टी भी क्या होती जाएगी, इनसिक्योर होती जाएगी, तो आपके जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फ्यूचर चेंजेस, आपका रेनफॉल सबसे बड़ा है। रेनफॉल में क्या हो रहा है, इंक्रीज्ड वाटर अवेलेबिलिटी इन मॉइस्ट ट्रॉपिक्स एंड हाई एल्टीट्यूड्स। पीपल इन द नॉर्थ आर वेरी हैप्पी। व्हेन आई आस्क्ड पीपल इन स्कर्दू, शिगर, गिलगित, उनसे मैंने पूछा कि मैंने कहा जी पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है, दे वर वेरी हैप्पी। उन्होंने कहा जी पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो हमारा एग्रीकल्चरल आउटपुट बहुत ज़्यादा हो रहा है। मोर वाटर मीन्स कि आपका वेपरेशन भी ज़्यादा होगा। दिस हैप्पीनेस इज़ जस्ट फॉर शॉर्ट टर्म, क्योंकि लॉन्ग रन में क्या हो जाएगा, आपका पानी कम हो जाएगा, ठीक है। Decreased water availability and drought in mid latitudes and semi-arid latitudes that we have seen in Punjab, that we have seen in Thar. We have experienced really bad drought this year. Then आपके temperatures are definitely going to increase from 1.1 to 6.4 from 1990 to 2100. Best estimates will be from 1.8 से लेके 5.4 तक आपका increase हो जाएगा, just imagine. उसके बाद आपका सी लेवल राइज आपका जनाब इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 22 से लेके 34 सेंटीमीटर। योर सी लेवल इज गोइंग टू इंक्रीज, जस्ट इमेजिन फ्रॉम इट इज 22 एंड देन इट गोज टू 34 बाय टिल 2080. should we care? I might not be living, you might be there, but we can't do much.
एक्सट्रीम इवेंट्स आपके जो साइक्लोन्स थे, टाइकून्स थे, उसके बाद हुरिकेन्स थे, दे आर मच इंटेंस, उसका जो इकोनॉमिक डैमेज है दैट इज़ फार मोर ग्रेटर। उसके बाद आपकी जो विंड स्पीड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं। नाउ द विंड डजंट वो जिसके अंदर ब्लो नहीं करती, नाउ इट्स ग्राउल, नाउ इट्स मेक सच वुल्फी नाउ नॉइज दैट यू गेट स्केयर्ड कि जी हवा को हुआ क्या है। एनीवे, इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स क्या होते हैं? डेवलपिंग कंट्रीज ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय दैट, जो हमने शुरू में एक बैकग्राउंड में असेसमेंट की थी कि जो पुअर आर गोइंग टू बी अफेक्ट, तो इन द ग्लोबल वर्ल्ड डेवलपिंग कंट्रीज आर द पुअर, ठीक है, तो पुअर आर मोर गोइंग टू बी अफेक्टेड बिकॉज वी आर क्लाइमेट सेंसिटिव इकोनॉमीज, वी आर मोर इनटू एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंडेंस है, फिशरीज पे ज़्यादा डिपेंडेंस है, सो दैट वाई इट इज़ गोइंग टू बी इम्पैक्टेड। आवर इनकम्स आर वेरी लो, ठीक है। उसके बाद आपकी जो वल्नरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, द इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी वीक, एक हवा का आता है झोंका एंड ऑल आवर हट्स एंड एवरी इंफ्रास्ट्रक्चर इज गॉन। उसके बाद इट थ्रेटन्स पॉवर्टी एरेडिकेशन, गो बैक टू मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कि वहाँ पे तो हम पॉवर्टी को ख़त्म करना चाह रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस द पॉवर्टी, वी आर इम्प्रूविंग द हेल्थ इंडिकेटर्स, बट विद क्लाइमेट चेंज दैट गोल सीम टू बी अ लिटिल बिट डिस्टेंस फार बिकॉज पॉवर्टी इज़ नॉट गोइंग टू बी एरेडिकेटेड बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। उसके बाद ग्लोबल जीडीपी आपका क्या हो जाएगा, 1 से 5% कम हो जाएगा अगर आपके टेम्परेचर में 4 डिग्री इंक्रीज होता है। देयर इज अ बुक कॉल्ड 6 डिग्री और उसके अंदर माइकल आई एम फॉरगेटिंग द ऑथर्स नेम बट 6 डिग्रीज इज द नेम ऑफ द बुक। व्हाट यू वुड सी दैट उसने 1 से लेकर 6 तक जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है उसने बताया है कि कैसे कैसे आपकी इकोनॉमी, सोशल सोसाइटीज़ आपकी कैसे कैसे इवॉल्व कर रही हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड बुक, इफ़ यू गेट टाइम डू बाय इट एंड रीड इट बिकॉज इट्स अ गुड रीड। सो आपके लॉसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अगर आप थर्ड पॉइंट देखें तो मैंने बात की हुई है स्टर्न की। स्टर्न ने कहा जी आपका 5 to 20% लॉस होगा अगर आपकी 7 to 9 डिग्री टेम्परेचर अगर आपका इंक्रीज होता है। सो आपकी जो कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स हैं उसकी फ्रीक्वेंसी हायर हो जाएगी और उसके डैमेजेस होंगे दिस टाइम दे आर गोइंग टू बी मच मोर हायर। People who are economists they can understand well, but otherwise you can see कि annual precipitation from 1901 से लेके अगर आप 2000 तक देखें तो वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। It has just fallen down over here. अगर आप प्रेसिपिटेशन लेवल नॉर्दर्न एरिया में देखें और सदर्न एरिया में देखें ये भी क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। वेयर यू गो, दिस वन ये आपका 2020 का है, ये थोड़ा सा बढ़ जाता है 2050 में चला जाता है एंड दिस इज 2080। बट ऑन द अदर साइड 2020 का देख लें, ये एक आ गया, ये भी इंक्रीज हो गया और 2080 में तो बहुत ही ज़्यादा। तो सदर्न पंजाब, southern Pakistan wale, be careful, the temperature is going to be very high by 2080. So let's migrate to northern Pakistan. Anyway, Pakistan के अंदर जो monsoon rains है उनका pattern has becoming really destructive. If you have been to Karachi, you can see एक दफ़ा बारिश पड़ती है and it's a flood situation. But some people say it's not the rain, it's basically the management. It's basically people are not prepared. Disaster preparedness है ही नहीं उस country, उस city के अंदर, क्योंकि rain कभी हुई नहीं और जब rain होती है तो ऐसी होती है that people are not prepared for it. So monsoon rains in Pakistan last year, all-time worst, 1400 died in floods and 13 lakh people displaced. और उसके बाद आपकी जो है shift in rain pattern, that we have seen very much obvious कि आपके जो rain pattern that has shifted a lot, as well as increase in the annual rainfall. अब rainfall वैसे कम होगी लेकिन जब होती है it is very high, very intense. Impacts in the northern areas, अगर आप northern areas में देखें तो जो आपकी ice reserves हैं वो क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। और ये एक तो हमारी ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन है आपकी रेड के अंदर। अगर आप रेड के अंदर ट्रेंड लाइन देखेंगे, हमने उसको डिक्रीजिंग ही दिखाया है, लेकिन ये वाला पॉइंट देखें अगर, एक्चुअली वो वाकई उससे ज़्यादा गिर गया है फ्रॉम 2000 से लेके 2010 के अंदर। तो हमारे आइस कैप्स आर मेल्टिंग अ लॉट एंड बिलीव मी, अब वो क्लाइमेट चेंज की नहीं हम बात करते हैं, क्लाइमेट सिक्योरिटी की बात करना पड़ना है कि देयर आर गोइंग टू बी सिक्योरिटी इशूज़। अगर आपका सियाचिन ग्लेशियर्स वैसे ही मेल्ट हो जाता है तो यू सी के हाउ द फोर्सेस आर गोइंग टू पोजीशन देमसेल्व्स ओवर देयर। उसके बाद मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स इन द नेक्स्ट 75 ईयर्स क्या वो कर रहे हैं कि आपका एग्रीकल्चर लॉस होगा ऑब्वियसली, उसके बाद आपके वाटर शॉर्टेजेस आ जाएंगे, उसके बाद मैसिव ड्राउट्स अब आ जाएंगे एंड वी हैव द फूड शॉर्टेजेस।
ये आपका मीन टेम्परेचर ट्रेंड पाकिस्तान का देखें कितना मज़ेदार है, एंड दिस इज़ फ्रॉम 1900 से लेके एंड इट इज़ गोइंग टिल 2000 एंड यू कैन सी हाउ द टेम्परेचर हैज़ वेरिंग। और अगर मैं ये इसकी ट्रेंड लाइन जो मैंने इसकी रिग्रेशन लाइन जो मैंने ड्रॉ की है, ये देखें इट शोज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड, सो टेम्परेचर इज़ इंक्रीजिंग एंड देयर इज़ अ 0.6 डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर आप प्रोजेक्टेड चेंजेस देखें इन द नॉर्थ एंड साउथ, तो ये देखें टेम्परेचर चेंजेस आपका नॉर्थ का ज़्यादा बढ़ रहा है और साउथ का भी आपका उसी तरीके से इंक्रीज कर रहा है। सो टेम्परेचर्स आर गोइंग टू बी वेरी मच इंटेंसिफाइड, देन वी आर नॉट गोइंग टू गो इन समर्स टू द नॉर्दर्न एरियाज, क्योंकि टेम्परेचर्स बाकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं। देन इम्पैक्ट्स इन पाकिस्तान, आपका जो जैसे जैसे आपके एक्सट्रीम वेदर आते हैं वहाँ पे आपका जो हेल्थ इंडिकेटर्स हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, दे स्टार्टेड गोइंग वर्स बिकॉज विद द मैसिव वाटर और आपके रेनफॉल्स, और इनसे क्या हो जाता है आपके ड्राउट की वजह से आपके मलेरिया और इस किस्म की बीमारियाँ आ जाती हैं। उसके बाद आपकी मरीन लाइफ आपकी ख़त्म होती जाएगी क्योंकि आपका मैनग्रूव कवर आपका ख़त्म होता जा रहा है। इफ़ यू रिमेंबर दैट केस स्टडी वी डिड ऑन केटी बंदर, तो आपका मैनग्रूव कवर जैसे जैसे कम होता जा रहा है, फिश स्टॉक भी आपका कम होता जा रहा है। उसके बाद आपकी जो इंक्रीज इन द अकरेंस एंड सेवियर स्टॉर्म्स एंड हरिकेन्स, जब हमने केटी बंदर में पूछा था, दे सेड अर्लियर मे बी 8 सालों में एक साइक्लोन आता था, अब ऑलमोस्ट एवरी ईयर हमें एक साइक्लोन का सामना करना पड़ता है। सो द फ्रीक्वेंसी हैज़ बिकम मच मोर हायर in terms of these cyclones. Abhi recently, a few years back, we had this formation of Atabad Lake in Baltistan due to severe landsliding and snowstorm. Temperature की वजह से एकदम बोगलत हुआ और एक पूरी की पूरी आपकी लेक बन गई वहाँ पे। Isn't that something to be, I'm not going to say in a positive manner, but it is something to be scared that okay, किस तरीके से आपकी एक पूरी नई लेक बन जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज। आपका टेम्परेचर वेरिएशन आती है और पूरा का पूरा ब्लॉक गिरता है एंड इट जस्ट फॉर्म्स अ होल न्यू लेक। देन आपके जो टेम्परेचर की जो सी लेवल्स की तरफ अगर हम जाएं तो राइज इन सी लेवल्स इन एक्सटिंक्शन ऑफ कोस्टल एरियाज, आपके जो कोस्टल एरियाज है वो आपके ख़त्म होते जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू बी एक्सटिंक्ट। अभी मैंने आपको केटी बंदर का बताया, इट चेंज इट पोजिशन 3 times. And you can see this is the behavior that it is, how it is increasing every time. आपका coastal level, आपका जो sea level है वो भी increase हो रहा है। पाकिस्तान को 2003 के अंदर it was a country that was under water stress, and we surpassed Ethiopia at par with African countries such as Libya and Algeria. अब ये हुआ कि जी हमारे पास 1947 के अंदर 5,600 था और अब हमारे पास 2025 के अंदर it's going to be 834. There's going to be a severe shortage of water in Pakistan in the upcoming years. और ये हमारी जो projection है fresh water की ये 2025 तक, and you can see कि किस तरीके से it is reducing. अब IPCC रिपोर्ट क्या कहता है, इंटरगवर्नमेंटल पैनल रिपोर्ट, उसने स्टडी किया फॉर कंट्रीज हु आर द मोस्ट रिस्क इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट रिलेटेड थ्रेट्स, और उन्होंने कहा जी पाकिस्तान कम्स ऑन 7th नंबर इन टर्म्स ऑफ फ्लड्स, वी आर रेसिपिएंट इन फ्लड्स इन टर्म्स ऑफ 7th नंबर, और हम एग्रीकल्चर में कहाँ पे आ जाते हैं, एग्रीकल्चरल थ्रेट की वजह से 12th नंबर पे आ जाते हैं। सो दैट इज़ अ स्केरी सिचुएशन। अब मेजर कंसर्न्स आपके क्या हैं, हमारे जो की सेक्टर्स हैं, वन ऑफ द की सेक्टर्स इज़ दैट वाटर एंड एग्रीकल्चर इज़ एट ग्रेटेस्ट रिस्क। वाटर का भी हमने देख लिया है, एग्रीकल्चर में भी देख लिया है, एंड इफ़ यू टॉक टू फार्मर्स ये दे वुड से कि जो हमारा जो क्रॉपिंग सीजन था वो भी क्या हो गया, पीरियड चेंज होता जा रहा है। अब हम हफ्ता 10 दिन पहले हमें सीड बोने पड़ते हैं और मे भी हमें हफ्ता 10 दिन पहले ही वो मार्केट के अंदर भेजने पड़ते हैं, तो आपकी मार्केट मैकेनिज़म्स चेंज होती जा रही हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपके रिस्क ऑफ फ्लड्स है, आपकी जो लैंडस्लाइड्स हैं, आपके जो ड्राउट्स हैं, आपके जो टाइफून्स हैं, उसके बाद इट हैज़ इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, और आपकी जो इंटेंसिटी है इन एक्सट्रीम इवेंट्स की वो ज़्यादा होती जा रही है। एवरी ईयर पाकिस्तान इज़ रेसिपिएंट ऑफ सच काइंड्स ऑफ फ्लड्स। Hopefully, I have been seeing this for the last 3-4 years. Every year पाकिस्तान के अंदर कोई floods आ रहे हैं, ठीक है। We formed the bodies like NDMA,
era इस किस्म के हमने institutions बनाए, but still I don't see the effectiveness of these institutions because yes, we are very good in making the reports, but in terms of measuring the actual damage and how these things are going to be mitigated, we don't have a bulletproof plan. People still migrate, people still have, people are not prepared. इस वजह से फिर हम उसमें फिर बात ले आते हैं कि चलो कम्युनिटी बेस्ड डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे चले जाते हैं. लेट द कम्युनिटी वर्क ऑन देयर ओन एंड लेट्स सी हाउ थिंग्स वर्क आउट. उसके बाद आपकी जो सिवियर वाटर स्ट्रेस कंडीशंस हैं, अभी आपने देखा थार के अंदर क्या हुआ, एंड आपकी रेनफॉल कम हो गई है, टेम्परेचर आपका ज़्यादा हो गया है, आपका सॉइल मॉइस्चर ज़्यादा होता कम होता जा रहा है, एंड इट मे लीड टू द एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट्स. अब आपका डेजर्ट क्या होता जा रहा है, वाइडन होता जा रहा है. उसके बाद आपके जो ग्लेशियर्स हैं, दे आर रिसीडिंग. वी हैव ऑलरेडी सीन द डायग्राम इन विच ग्लेशियर्स का जो पैटर्न था वो 2000 से 2010 के अंदर इट हैज़ जो हमने प्रोजेक्टेड लिखा हुआ था उससे ज़्यादा वो रिसीड किए हैं. ठीक है, इट मे बी इंक्रीज्ड सम ऑफ वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी इन द समर्स, एंड इट माइट बी टोटली डिसअपेयर. जब ग्लेशियर्स आपके सारे मेल्ट कर गए तो आपका वाटर फ्लो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा और ग्लेशियर्स भी आपके टोटली एलिमिनेट कर जाएंगे. उसके बाद हमारे पास रिडक्शन इन कैपेसिटी ऑफ नेचुरल रिजर्वायर्स ड्यू टू rise in snow line and mountains with increase in surface temperature may risk in the floods during the wet season. कि जैसे जैसे आपका क्योंकि natural reservoirs हैं, जैसे जैसे आपकी बर्फ़ पिघलती जाएगी तो वो that may create a flood situation in the northern areas. उसके बाद आपकी agricultural productivity, it has suffered a lot. And why? Because of the high temperatures, because of droughts, because of flood conditions, because of soil degradation. और अब हमारा जो नया threat आएगा, which is again the upcoming topic in our lectures, that is going to be food security. Food security पे भी बहुत काम होने वाला है. We are not agriculturally sustainable. We still have to import things. And with these increase in temperatures, that is going to have a really severe impact on food security, and believe me, the next upcoming threat is going to be high inflation in terms of food. आपकी जो food की items की जो prices होंगी, they are going to be very high. अब large reduction in productivity of both warm and cold water fish due to oxygen depletion in aquatic systems. आपके जो aquatic systems हैं वहाँ पे ऑक्सीजन की आपकी कमी होती जा रही है और आपकी वहाँ से फिश स्टॉक क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है. अब क्या हुआ है कि जी आपका जो salinity इंक्रीज़ करती जा रही है, सी लेवल इंक्रीज़ करता जा रहा है, salinity आपकी ज़्यादा हो रही है, फ्रेश वाटर आपका कम होता जा रहा है, मैनग्रोव्स आपके कम होते जा रहे हैं, तो फिश स्टॉक भी आपका क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है. यू सी एवरीथिंग इज़ इंटररिलेटेड विद ईच अदर. एक चीज़ को आप पिंच करें, इट विल जस्ट like impact the whole system. It is the same thing. अगर आप अपनी बॉडी के किसी हिस्से पे एक पिंच करें तो आपके पूरे जिस्म में दर्द होगी. इट इज़ द सेम थिंग कि अगर अपने क्लाइमेट में किसी एक वेरिएबल को अगर मैं सिर्फ फैक्ट्री एक नहीं लगा लेता हूँ और उससे कार्बन एमिशन ज़्यादा हो जाती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो इट विल डेफिनेटली गोइंग टू इम्पैक्ट द होल इकोसिस्टम. ठीक है. And the challenging thing is कि अब as a policy maker, as a planner in natural resource management, अब क्या होगा, आपके सारे resources एकदम आपके change हो जाएंगे. टेम्परेचर के increase करने से deforestation आपकी ज़्यादा होती जा रही है. Deforestation अगर ज़्यादा होती है then what is the impact on the livelihood? Poverty आपकी बढ़ गई, governance आपकी ख़राब होगी, environmental quality आपकी वैसी बैठ गई. So therefore it is a multiple जिसे कहते हैं multiple stressor situation where a lot of variables are going to stress the situation. And who comes under stress? It's you people when you are in the positions of policy, when you are managing the natural resources, because these are uncontrollable factors. हम environment को as such वो जिसे कहते हैं environment को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम एनवायरनमेंट को मैनेज कर सकते हैं, बट ह्यूमन फिनोमेना ये रहा है, वी ऑलवेज वांटेड टू कंट्रोल इट. दैट वाज अ फॉलिसी, दैट इज स्टिल अ काइंड ऑफ स्टूपिडिटी. Enhanced risk of life and property in coastal areas due to increased intensity of tropical cyclones combined with sea level. ये हमने पढ़ा था पहले भी कि जी frequency of floods, cyclones ज़्यादा होती जा रही है, that's why अब coast line पे as such communities नहीं हैं और वो communities दूर होती जा रही हैं. High risk for Karachi and other coastal areas of Sindh Makran coast.
Malaria बहुत ज़्यादा हो गया है, vector borne and water borne and heat related diseases due to warmer and wetter conditions. People are suffering from these situations. Then we have our mountain ecosystem is becoming very fragile, and it has a negative impact on our climate change system. And due to the increase in biodiversity, which is already at risk to land, to cover change, it puts pressure on the population. अब हमारा conclusion क्या आता है? Given all the situation, climate change is there, climate change is happening, climate change is actually impacting population, where population is acting as a catalyst, humans are acting as a catalyst in terms of increasing the intensity of climate change. Over there, they are also being suffering from that. How, what we can do? Temperature increases both in past projected are higher over Pakistan. ठीक है, जो हमने projections की थी टेम्परेचर से ज़्यादा increase करता जा रहा है, and it is making us much more vulnerable. We need intensive research. One of the issues is that we start following India, Nepal या बांग्लादेश की studies को हम देख के कहते हैं जी पाकिस्तान में भी climate change बहुत हो जा रहा है. But the problem is we do not have ground reality studies. अभी जब IPCC की report है, believe me, in IPCC report there is very few studies that are quoted from Pakistani region because we don't have any study. Researchers are not even interested in developing any case study, in developing the baseline information. The data we have, that is a polluted data. आपको पता नहीं कब से data पड़ा हुआ है, and we don't know how to manage it, and it is just not in a good situation. So lot of research is involved, is required for climate change. Then Pakistan has more glaciers than anyone in the land outside the north and the south poles, with sizable ones in Karakoram ranges. Our glaciers melt होते जा रहे हैं in the wake of climate change, and it is going to be a threat for your water security के अब आपके issues हो रहे हैं. So we need to have some research with reference to water issues, with reference to water security, that how to balance this melt and how to balance the reserves that is coming from these glacier meltdown. फिर हमें capacity building चाहिए, हमें कोई mathematical models चाहिए so that we can forecast that what kind of environmental changes are going to come with reference to the climate change. As natural resource managers, that is your job to just have such kind of studies being done so that हमारी जो policy जब बने या जो हम natural resource की जब management की बात करते हैं, so it gets better. उसके बाद climate policy आपकी आ चुकी है. The next lecture will be with reference to climate policy कि हमारी कैसी आई, किस तरह आई, क्यों आई, कब आई. That are all the questions that we are going to talk about it. So it need to spell out climate policy, which is the guideline, which is the beacon light for the climate change and how all other systems are going to be changed with it. So it needs to be spell out loudly, and it needs to be addressed to be taken off account of all the issues that are being pertinent with reference to environmental changes. And last, climate change is a new discipline, so let's make it mandatory in all the institutions and all the research think tanks के climate change पे काम किया जाए, and in universities it should be part of the curriculum so that students and the younger generation knows that this is a bigger threat than 9/11. Global responses में क्या आ जाता है कि there are a number of countries, as हमने कहा कि इसमें ज़्यादा research की बात है, because if you have a accurate information then we can have a better policy. So in South Asia, India has some 20 establishments. In Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, वो भी climate change research में engaged हैं. पाकिस्तान के अंदर universities के अंदर अब climate change के program start हो गए हुए हैं. For example, PIDE के अंदर there's a full-fledged degree in climate change. उसके बाद ComSats के अंदर we have this Center for Climate Change, and then NGOs ने अपनी research initiate की है जिसके अंदर STP है या Lead Pakistan है, IUCN, WWF Pakistan, they are initiating these research, but it's not sufficient. We need to have more researchers involved in climate change research. And China ने बहुत सारी अभी अपने वो establishments किए हैं where they are talking about climate change research. So ladies and gentlemen, we finish up over here. And this is what is the global reality, and let's see climate skeptics should at least change their mindset, because
climate change is really happening, and it is definitely going to change the course of our lifestyle. It is definitely going to change the way we have managed our natural resources. It is going to alter the achievement of our development goals. So that is something that we cannot control, but yes, we can manage it. अगर हम सब factories everything बंद भी कर दें, still your world temperature, your global temperature is going to increase from 2 to 3 degree centigrade. आपका फिर भी increase करेगा, क्योंकि जो activities हो चुकी हैं उन्होंने अपना भी तो भी जब तक complete नहीं होती तब तक आपका temperature बढ़ेगा. So अगर हम सब कुछ रोक भी दें, still temperature is going to increase. So it's an emerging threat. It is clear and present danger. Now the ball is in your court, because older generation ने जो past generation थी जो उन्होंने काम करना थे, they have done it. Now they can't come. We can't revert the past. Now we have to alter the future. Now we have to change the present. And the bigger question is how to do it and who is going to do it. That is just you and me. Either we start accepting the reality, or we do something really pragmatic that actually changes the total course of action. Thank you very much, and see you in the next lecture.